ट्रस्ट मी यू गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लगाएं और 2 दिन में या 3 दिन में आपके स्कार्स या मार्क्स चले जाएं. Why do men have such better skin than women? Don't invest in 3,000, 4,000 rupees ka creams. Basically, you're saying hair oil isn't solving any problem. No, I hate it. No. So how helpful are these home remedies? Santra, neembu, tomato, all of Acidic these things. acidic fruits, they are very bad for your skin. Have you seen Rajkumar Rao's chin, which was trending? Fillers and Botox are two very different things again. How safe is laser hair removal? It is not permanent hair removal. What do you think is the biggest scam in the beauty industry? Don't have to follow the advice of all those beauty gurus and influencers. आप अपने डॉक्टर पे सीधा सीधा जाइए. I think we should just stop DIYing things with skincare and hair care. Best solution for dandruff? So difficult to answer. Sunscreen is not helping you in a way कि आपको लगे कि मैं कभी tan ही नहीं हो सकती. धोखा लग रहा है? Yeah, the sunscreen that I use reads anti-tanning sunscreen. Welcome back to another episode of Just Checkup. I am Sonali. And I am Nishta and आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सारू सिंह जो हैं एक एस्थेटिक फिजिशियन एंड आज का एपिसोड इज गोना बी ऑल अबाउट ब्यूटी. Welcome, Dr. Saru. So, let's get started. Let's get started. Nishta, what should we start with? I think we should start with the basics right now. Sure. We can see there are 3 people in this room, but it's not just 3 people. There's a 4th person, my pimple, just came this morning. यहाँ पे भी कुछ और लोग हैं. So yeah, so let's talk about pimples, okay? So मेरे को हमेशा ये बताया गया था कि puberty तक is the time when you get pimples. But ये adult acne क्या चीज़ है? मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है. अगर हम बेसिक्स की बात करें, पिंपल्स या एक्ने एब्सोल्युटली कॉमन एंड एडल्ट एक्ने इतना ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल कि यू कैन नॉट बिलीव व्हेन पीपल टेल मी कि मैम हम प्यूबर्टी में बिल्कुल एक्ने नहीं था हमें एंड सडनली व्हेन दे हिट अ पर्टिकुलर एज दैट्स व्हेन द एक्ने स्टार्ट्स. अब बहुत ज़्यादा वी नीड टू ब्लेम आवर लाइफस्टाइल फॉर इट, सोनाली, ऑनेस्टली. Sometimes hormonal changes are the reason. And a lot of times it's basically a person who's trying to experiment with their skin a lot. You understand? Because these days everybody is so curious about, acha, haan, you have a beautiful skin, and then you'll come up and tell me, oh no, I use this product and this is why this has happened. So adult acne is basically a cumulative, uska jo reason hai is hormonal changes, a bad diet, a bad lifestyle, and all of those things that just when put together will give you adult acne. And you'll be surprised to know, Sonali, ki kitna acne, adult acne is a result of gut imbalance. Okay. So there's a direct connection between your gut as well as your skin. So I know people जिनको dairy से ज़्यादा allergies होती हैं, nuts allergy, eggs can give you breakout. आजकल बहुत common है जिससे कि adult acne males में हो रहा है, which is whey protein. Oh yeah. Okay. Yeah, it doesn't So suit me. your diet is also a big part as to why you would experience acne, Okay. if that makes sense. So, okay, when it comes to pimples, should you pop them or should you not pop them? Absolutely no popping, Sonali. But there's so many videos where, Yeah, you know, it like looks so Dr. nice. Pimple With Popper and doctors, everything. yeah. I know it feels very satisfying. बहुत Very मजा आता है when you do that. But no, आप उससे क्या करते हैं? आप अपनी स्किन में ना deeper injury create करते हैं. And एक तरीके से आपका जो infection है, if I have to explain it in a layman's language, आप उसको और inflame करते हैं, अपने angry जो अपना pimple है उसको आप और ज़्यादा angry करते हैं. अच्छा. So जब आप वो करते हैं, आपको क्या होगा? Inflammation बढ़ेगा. It will never die down. It will always lead to either आपको और लगेगा कि यहाँ से acne होके there will be a cluster formation of acne because of the spread of infection. दूसरा ये होगा कि आपको सिर्फ acne scar ही नहीं होगा, it will also lead to a very deep mark on your skin. Right? So popping is something that should not be done. Yes, when you go to a doctor's setup, when they are doing it, they're doing it very hygienically. उस एरिया को क्लीन करके they're using some sort of tools जिससे कि वो आपका पिंपल क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं. But at home when you're using fingers, absolutely not. That's the worst. But in general, what kind of food people should avoid when it comes to breakout? Yes, like I said कि gut से direct connection है आपकी skin का. Foods हम ये कहते हैं कि generally for any XYZ disease also, when you look at a plate, you should know कि क्या जो मैं खा रही हूँ is good for me. So ideally speaking, you must have heard it a lot of times कि मैं डॉक्टर के पास गई, सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो, राइट? सो बिकॉज देयर आर स्टडीज जिससे कि डायरेक्टली प्रूव होता है देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्ने फॉर्मेशन एंड डेयरी कंजम्पशन. सो योर योगर्ट, योर डायरेक्ट काउज मिल्क कंजम्पशन. क्योंकि होता क्या आजकल बहुत सारे जो लोग हैं दे आर एलर्जिक टू काउज मिल्क प्रोटीन.
उसका एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है आपसे स्किन में इन्फ्लेमेशन होने का। दूसरी चीज़ जनरली जो लोगों में अवॉइड की जाती है वो है नट्स। सो यू नो काजू, बादाम, पिस्ता, ये चीज़ें जनरली गर्म होती हैं। Although it's not for everybody, this is not like a hard and fast rule, but this differs from person to person. The third food substance that I have seen in my practice is eggs. कि आज मैंने एग खाया, इमीडिएटली मुझे एक्ने हुआ। एंड मोस्ट कॉमन, अब समर टाइम आ रहा है, वी आर ऑल गोइंग टू relish our mangoes, right? So there's the big notion कि मैंगो खाते ही एक्ने होता है, and It's true? It's true. It's kind of true. Even though a lot of dermatologists and aesthetic physicians do have a different school of thought कि नहीं ऐसा नहीं होता है, but yes, there is a correlation between. Now this could be very personal कि क्या उस इंसान को उस चीज़ की एलर्जी है, या there is something that triggers inflammation in their body. But yes, mangoes can also give you acne. So आप बोल रहे थे about the hyperpigmentation that stays, and even the acne scarring that stays after the pimple goes away. What do you do about the hyperpigmentation and scarring that's formed because of acne? Right. So Sonali, just to put things in perspective, एक होता है post inflammatory hyperpigmentation, जो कि आप brown color के marks अपने skin पे देखते हैं, right? Yeah. बहुत लोगों को ये होता है, common है। दूसरा होता है जो आपकी स्किन पे डेंट्स पड़ते हैं, you mean स्कार्स होते हैं, राइट? सो स्कार्स कई तरीके के होते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं, बट हम एक जनरली, जैसे मैं कहती हूँ, एट्रोफिक स्कार्स फॉर एग्जांपल। अब ये जो स्कार्स होते हैं ये क्यों बनते हैं? कि इन्फ्लेमेशन, या तो आपको बिल्कुल पॉपिंग की आदत है, या आपकी स्किन बैरियर आपका कहीं ना कहीं डैमेज्ड है, तो आपका जो स्किन का सर्फेस है ना, उसमें कोलेजन ब्रेक डाउन हुआ है नीचे। सो व्हेन कोलेजन डिप्लीशन हैपेंस, दैट्स व्हाट लीड्स टू दैट dent formation in the skin. So scars are comparatively harder to treat rather than those brown marks. Brown marks के लिए आप लोग घर पे अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप घर में अपनी जो क्रीम्स और फॉर्मुलेशंस हैं उनसे आप काफ़ी बेटर फील कर सकते हैं। बट फॉर दोज डीप स्कार्स आपको चाहिए कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज, जिनको हम कहते हैं, विच हैपन्स जनरली कि आप कोई लेज़र डिवाइस ले लीजिए, उससे ठीक कर सकते हो आप। आजकल बहुत कॉमन है माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्किन को फोर्स करते हैं अपने आप को हील करने के लिए और कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। And what are the formulations that you can use for acne, spots and hyperpigmentation? Yeah, so that's a good question. So basically when it comes to PIH, hyperpigmentation के लिए हम लोग जनरली जो डॉक्टर्स देते हैं, so हम टायरोसिनेज इनहिबिटर्स प्रेफर करते हैं। होता क्या है, बेसिकली ये ऐसे ड्रग्स हैं जो आप टॉपिकली अपनी स्किन पे लगाते हैं, एंड दे विल आस्क योर स्किन टू नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट, राइट? एंड अगर पिगमेंट प्रोड्यूस हुआ भी है तो हम उसको थ्रू जेंटल एक्सफोलिएशन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको लाइटन करते हैं। उसके साथ साथ वी ऑल्सो गिव स्किन लाइटनिंग एजेंट्स, राइट? सो बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कोजिक एसिड, आपने सुना होगा अल्फा आर्बिटन, थोड़ा स्ट्रॉन्गर है लेकिन हाइड्रोक्विनोन। सो ये सब हम देते हैं प्रिस्क्राइब करके, सुपरवाइज करके अपने पेशेंट्स को कि आप ये लगाइए, एंड डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 12 weeks, बिकॉज देर इज नो मैजिकल ट्रीटमेंट। लाइक ट्रस्ट मी यू गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लगाएं और 2 दिन में या 3 दिन में आपके स्कार्स या मार्क्स चले जाएं। आपको एक बहुत कंसिस्टेंटली अपना स्किन केयर प्लान करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली इज वॉट यू गोइंग टू यूज दीज प्रोडक्ट्स फॉर। इफ यू वुड टेल मी कि मैम आई हैव अ ड्राई स्किन, देन आई वुड गिव यू समथिंग लाइक लैक्टिक एसिड ऑल्सो, जस्ट लाइक एड ऑन कि आप अपने स्किन पे वो लगाइए, सो जस्ट टू इंक्रीज रिजल्ट्स। सो अल्फा आर्बिटन मे बी इन द मॉर्निंग विद योर विटामिन सी विल बी ग्रेट फॉर यू। विटामिन सी इज अगेन एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अमेजिंग उसके रिजल्ट्स होते हैं। एंड रात को यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ से कोजिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अगेन ये सारे जो फॉर्मुलेशंस आते हैं, आपके डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है कि आपकी स्किन को क्या सूट करेगा। Let's come to actives then, since we are already talking about actives. Abhi, we were just talking how lockdown के time पे I think all of us are sitting in our homes and face पे कुछ लगा रहे थे, and we discovered all these videos and all of these actives. I mean पहले हम लोग creams कैसे खरीदते थे? Your favorite actor is endorsing this cream, buy it. Which one looks pretty, Yeah. which one looks better, better. But nicer. now you have to go through an ingredient list and see उसमें कौन से actives है. So there are acids, the AHAs, BHAs, PHAs, hyaluronic acid, there is vitamin C, there is niacinamide. I know that's daunting for people ki where should we go, and that is one question that I get a lot. I wanted to know, as a beginner, if I'm starting my skincare journey with actives, so what kind of active should I start with? Like what is the basic? Basic, right. So, Nishtha, it's a very good question. Now, again, मैं शुरुआत हमेशा इसी बात से करूँगी कि ये डिफ़र करेगा पर्सन टू पर्सन।
अब आप मेरे सामने बैठे हो एंड यू गिवन मी अ पर्सपेक्टिव कि आपका ऑयली स्किन है, एंड लुकिंग एट योर स्किन आई फील कि आई डोंट सी टेक्सचरली बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है. बट इफ़ यू कम टू मी एंड टेल मी कि आई जस्ट नीड समथिंग टू जस्ट give my skin a boost up, right? तो I would prefer vitamin C for you for sure. And vitamin C एक ऐसी चीज़ है, yes, I wouldn't say कि 100% of the population will get results with it. बहुत सारे लोगों को vitamin C भी नहीं सूट करता है. But overall, in my practice, I've seen that vitamin C is the safest option to be given to anybody to just start. अब उसमें भी हम percentages और concentration matter करता है, क्या formulation है. So for you, I would start with a minimum of 10%. एंटीऑक्सीडेंट है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डेली सुबह लगाइए इसको, एंड पेयर इट विद द सनस्क्रीन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने विटामिन सी अकेले लगा के अगर आप 2 घंटे धूप में जा रहे हो, दैट विटामिन सी इज नॉट गोना बी ऑफ एनी यूज टू यू. सो व्हेन यू पेयर इट विद योर सनस्क्रीन, इट एंश्योर्स कि एक तो आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिल रहा है, प्लस यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द हार्श यूवी रेज. सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. सेकेंडली, हम पेयरिंग जो करते हैं हमेशा बहुत ध्यान से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ऑयली स्किन का कंसर्न है तो मे बी रात को आई गिव यू समथिंग लाइक अ niacinamide to ask your sebaceous glands to control oil production. Maybe acne scars and marks पे भी niacinamide काम करता है तो उस पर भी आपको हेल्प मिलेगी. So niacinamide would be something that I'll give you. अब niacinamide के साथ अगर डिपेंड करता है कितना acne आपको है, so sometimes we pair it with retinol. So niacinamide and retinol is again a very good combination to be given together. So it all depends on person to person, and basic जो है आपका, you can start with vitamin C, niacinamide, रेटिनॉल. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सबके साथ यूज़ करते हैं. बट अगेन रेटिनॉल कम्स विद इट्स ओन इश्यूज, विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू स्टार्ट अबाउट. बट येस, ओवरऑल देखा जाए, सो दिस इज माई बेस लाइन स्टार्टिंग फॉर एनी पेशेंट. I wanted to ask about retinol so much because right now it's being promoted as this miracle ingredient कि आपके wrinkles चले जाते हैं, pimples चले जाते हैं, hyperpigmentation, everything, it just takes it away magically. Retinol is actually magical. Is it that magical? Yes, why not? I mean, in our practice, retinoids and retinol जो भी एक बड़ी family हम इनको कहते हैं, there are different type of retinoids also available in the market. कुछ आपके सेंसिटिव स्किन के लिए बनते हैं, कुछ आपके स्किन के लिए बनते हैं जिनको बहुत सारा एक्ने है. द मोस्ट पावरफुल वन बीइंग tretinoin, which is easily available in the market. So definitely I would say magical है, but बहुत पेशेंस से वो मैजिक दिखता है. It is not like a quick. But I've also heard the downside of it. एक तो pregnant women, lactating mothers can't use retinol, and I've also heard that ये आपके system में 6 महीने तक रहता है. So even if you're planning a pregnancy or something, you have to be off it for 6 months. happens Is that with true? oral medication, ये which is oral भी- oral retinoid. Oh, वो हम okay. कंज्यूम करते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है. डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेकिन लेना चाहिए. कई लोग इसको अब्यूज़ करते हैं. आइसोट्रेटिनोइन, एक्यूटेन, अलग अलग नाम से आता है. वो आपके सिस्टम में रहता है, येस, बिकॉज you're इंजेस्टिंग इट, you're टेकिंग इट ओरली. जो आप स्किन पे लगाते हैं वो भी कुछ हद तक एब्जॉर्ब होता है, बट इट विल नॉट स्टे इन योर सिस्टम एज लॉन्ग. Oh, okay. सो तब भी टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज वो जो आइसोट्रेटिनोइन या एक्यूटेन की हम बात कर रहे हैं, ओरल रेटिनॉइड की जो हम बात कर रहे हैं, वो स्टडीज़ में आएगा इट इज़ टेराटोजेनिक इन नेचर. सो टेराटोजेनिक एक वर्ड होता है जिसका मतलब है कि वो आपके अनबॉर्न बेबी या फीटस को हार्म करता है, राइट? तो उसके डेवलपमेंट में हार्म करता है. So this is both for oral and topical. दिस इज़ मोर फॉर ओरल, बट क्योंकि ओरल में देखा गया है, टॉपिकल फिर हम उसको कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. I actually wanted to just ask some thing on retinol. So, at what age should someone start using retinol, and with what percentage should they start? राइट. सो एज का निष्ठा ऐसा है कि अगेन रेटिनॉल का एक सब टाइप है अडैप्लिन, जिसे हम कहते हैं. अडैप्लिन हम एज यंग एज 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, टीनेज एक्ने में भी बच्चों को देते हैं, राइट, लगाने के लिए. सो अगर आप कहें कि रेटिनॉइड को अगर आपने एंटी एक्ने के हिसाब से यूज़ करना है तो यू कैन स्टार्ट एज यंग एज योर टीन्स. 13, 14, yeah. या सो दैट इज जस्ट टॉपिकली दैट यू गिव. एंटी एजिंग के लिए आई फील एनी टाइम बिटवीन 25 to 27 इज़ द बेस्ट. आप उसको प्रोफाइलैक्टिकली, जैसे हम कहते हैं, कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं ग्रेजुअली. डोंट ओवर डू इट, बट यू कैन जस्ट स्टार्ट इनकॉपरेटिंग इट मे बी 1 night in a week or 2 nights in a week, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे. Since we are talking about vitamin C, I had this query. I take vitamin C orally because I have a lot of allergies. Yeah. So I'm usually on a vitamin C supplement. So what is the difference between applying it topically and consuming it? Does it give the same effect?
No, I don't think so it'll give you the same effect. So when you're consuming it orally, it's working more systemically into your body. Okay, पर वो स्किन पे नहीं जाता है वो. जाता है, बिल्कुल जाता होगा. Internally it is going to help you. But when you apply it topically, that's also a sort of extra layer that you're putting on your skin. And when it is absorbing, so आपको एक additional protection मिलता है. Okay. When it comes to physical scrubs, there's a lot of buzz right now that they are not good for your skin. And people are shifting to chemical exfoliation. So what exactly is chemical exfoliation, and what acids do you suggest for beginners? That walnut scrub used to feel so luxurious. ऐसा लगता था कि you know बस now we have it and we're going to change our skin. But that is the worst. So physical scrubs is the worst thing. Why? 2 reasons. Harsh है because you know you're using something which, especially walnut की skin का अगर आप देखें, you're using something which can create micro injuries on your skin. So micro injuries जब आप skin पे create कर रहे हैं, then obviously injury is an injury. आपको post inflammatory hyperpigmentation के chances बढ़ जाते हैं. What about body? Body पे बहुत लोग करते हैं, but there are a lot of gentle body scrubs also available in the market. Why go for something like walnut? Why go for something super harsh? Again, but I would still not prefer physical scrubs anywhere on the body, you know, because आजकल people are also very कि मेरे dark elbows हैं, dark knees हैं, तो why do you want to scrub it off? You're just going to create more trauma, more injury. Okay, So- chemical exfoliation. Now, chemical exfoliation is something which is very gentle. However, there's a catch again कि आपको पता होना चाहिए किस concentration में आपने use करना है, कितना use करना है, कब use करना है. Again, you know, don't have to follow the advice of all those beauty gurus and influencers. आप अपने डॉक्टर पे सीधा सीधा जाइए, उनको बोलिए कि आपको एक्सफोलिएशन चाहिए. Now, at a doctor's clinic, they will do chemical peels for you, which is again a chemical exfoliation where they're applying a certain chemical. That chemical is helping you get rid of your dead skin build-up. Exfoliation क्या है? आपको यही करना है कि आपका जो dead layer का skin है वो निकालना है, so that the fresh, new, younger cells can pop in. राइट, सो दैट इज द एंटायर प्रोसेस. अब वो आपको केमिकल एक्सफोलिएशन आप चाहे क्लिनिक पे करवाइए या आप घर पे करवाइए थ्रू यूज ऑफ योर AHAs, BHAs, your PHAs, LHAs, all of those things. So that is chemical exfoliation. Now, Sonali, we have talked so much about the sun. Yes. So let's talk about sunscreen also. Yes. So, I mean, sunscreen को लेके ना बहुत सारी चीज़ें हैं. There are so many sunscreen in the market. एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सनस्क्रीन आपके स्किन केयर रूटीन में. बहुत ज़्यादा. तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज जिस कि हाउ डू यू चूज़ द बेस्ट सनस्क्रीन? व्हाट आर द थिंग्स दैट वो लेबल में क्या पढ़ना चाहिए कि ये होना ही चाहिए आपकी बिल्कुल, सनस्क्रीन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो सनस्क्रीन अब इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, पहले मैं वो बताना चाहूँगी. बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट अभी कैसा है, ओजोन डिप्लीशन हमारे हो चुकी है. सो यूवी रेज जो पहले फिल्टर होके अर्थ पे आती थी, अब वो डायरेक्ट आती हैं. UVA एंड UVB 2 टाइप की यूवी रेज होती हैं. UVA होती हैं जो आपकी स्किन को बहुत जल्दी फास्ट एज करेंगी. UVB और ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इससे आपको पिगमेंटेशंस होगा, इवन स्किन कैंसर हो सकता है. सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन इज़ नाउ अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि बहुत लोगों को पता है. इट्स नॉट कि नाउ दिस इज समथिंग कि लोग सनस्क्रीन ज़रूर लगाते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स करते हैं. सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आपने सनस्क्रीन लगाया एंड सबको कॉमनली ये भी पता है कि आपको 2 फिंगर रूल अप्लाई करना है. बट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल आर मेकिंग, सोनाली, इज कि आपने 2 फिंगर लगाया, 8 AM लगाया, एंड यू आर नॉट रीअप्लाइंग इट, राइट, थ्रू आउट द डे. That's what we सो discussed यू now, yeah. फील कि आपने 2 फिंगर लेंथ लगा के यू आर डन फॉर द डे एंड यू आर फुली प्रोटेक्टेड. नो, यू नॉट. आपको जनरली देखना है कि आपने जो, सपोज अगर आप एक सनस्क्रीन ले रहे हैं, पहले आपने सबसे पहले देखना आपका स्किन टाइप क्या है. सो देयर डिफरेंट फॉर्मुलेशंस. ड्राई स्किन के लिए अलग आता है, ऑयली स्किन के लिए मैट फिनिश आता है, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स आते हैं, आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स आते हैं, मिनरल सनस्क्रीन्स आते हैं. सो सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप का सनस्क्रीन चाहिए. दूसरा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF होता है. आपको देखना है कि व्हेन यू लिव लाइक इन अ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक आवर्स, इट हैज़ टू बी अबव 30. 50 हो तो बहुत ही अच्छा है. 50 is what we recommend. So 30 to 50 is the range that we're looking at. Ideally 50 is what we'd recommend. Then there is something known as PA+++. ये आपको बताता है कि आपको UV rays से protect करना है. So you have to look for maximum pluses there. Okay. So PA++++. 4 pluses, the more the plus the better. Right? ये चीज़ें आपको देखनी है. And then finally आपको ये देखना है कि आपको कौन सा sunscreen सूट करता है.
what might suit Nishtha will not work for Sonali. What works for Sonali might not work for me. So this is a lot of trial and error that goes into this. So basic जब आपको ये पता है, अब आपको थोड़ा सा hit and trial अपने sunscreen के साथ कई बार करना पड़ता है. And वो हो जाए एक बार, then you know the sunscreen works for you, then you just stick with it. You also talked about reapplying sunscreen. So at what time, like what time interval should one reapply the sunscreen? Yeah, so एक general rule आप follow कीजिए कि जो आपने 2 SPF अगर आपने 50 लगाया है 2 full finger length 3 hourly आपको reapply करना है. Okay, and then another mistake that people do is they apply it. For example, I apply it right now, and 2 minutes I'm outside in my car driving to my work. No, you have to wait for at least 15 to 30 minutes for it to kickstart, and then you leave the house. I think guilty as charged. Yeah. A minimum of 15 minutes is what you must wait. Sometimes I sit in the car and I put sunscreen on my arms. No. Yeah, so, but then you'll get the benefit after 15 to 20 minutes. Oh. So this is again one big mistake that people make. So always, you know, thoda I know सबको सुबह सुबह late हो रहा होता है, but then you'll have to just sort of make that time and effort. And then sunscreen alone is again not going to help you. Let me just make that very clear. A lot of time people have this misconception कि मैंने sunscreen लगाया, सब कुछ किया, reapply भी किया, तब भी I am getting tanned. Now this is again a big thing. So let me tell you, Sonali, sunscreen is not helping you in a way कि आपको लगे कि मैं कभी tan ही नहीं हो सकती. The sunscreen that I use reads anti-tanning sunscreen. Yes, but why is it anti-tanning? Because you have to see आप कितना sun exposed हो. अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए sun exposed हो, understand tanning is a protective mechanism of your body. Tanning happens because your body is, you know, helping you protect yourself from UV damage. So बहुत बार लोग ये सोच के सनस्क्रीन लगाते हैं कि इससे हम टैन नहीं होंगे, बट आपको ये सोच के लगाना है कि इससे हमें बहुत डीपर सेल्यूलर डैमेज नहीं हो रहा है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. टैनिंग हम रिवर्स कर सकते हैं, बट बहुत डीप अगर सेल्यूलर डैमेज हो जाता है यूवी रेज से, जो कि बहुत कॉमन है, जिसके कारण यू नो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज स्किन कैंसर भी होता है लोगों को. हमें वो चीज़ प्रोटेक्ट करना है, उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. Guys, सनस्क्रीन लगाने से टैन प्रिवेंट नहीं होता. बिल्कुल नहीं होता, एंड दिस इज अ ह्यूज मिथ. Moving on, this is a rapid fire segment, okay? Okay. It's called Does It Really Work? Okay, do I have to answer in like one word or? No, you can answer briefly in a sentence Short or and two. crisp. Okay, Yeah, short and perfect. crisp. I'll try. ठीक है. Start. Okay, so I think Shark Tank के बाद everyone would be knowing about this, the viral face yoga technique. Yes. So face yoga, definitely I would say it works, right? Because yoga may, just like your other muscles on the body, you need your facial muscles to also work. And I think the more toned your muscles are, you will always look good, you look rejuvenated, you look fresh, young. So I feel yes, face yoga when done correctly works. Moving on, next, LED face masks. LED face masks work. They do? work. Yes, red light face masks, they definitely work. But again, बहुत सस्ते Chinese भी आते हैं which don't really work. So this one has been going pretty viral from quite some time. These viral collagen overnight mask, मतलब लगाओ and then वो एकदम dissolve हो जाते हैं skin में. No, I don't think that works. That's a little gimmicky. Collagen is a bigger molecule. आपके skin में वो absorb नहीं होता है. Maybe आपको थोड़ी देर के लिए it will give you an effect of hydration, but not a long-term effect. Okay. Moving on, hair gummies, जो आजकल over the counter हर जगह मिलता है. Do they work? Hair gummies के लिए I would say no. थोड़ा controversial होगा. But मैंने generally ये देखा है कि उसमें sugar content ज़्यादा होता है. So, you know, being a doctor, I would rather give you a very good hair supplement than a hair gummy. Speaking of creams, ceramides, which is the word of the You'll find it year, in every I think. product Yeah. now. Yeah, and we love it. Dermatologists love ceramides. Ceramides are absolutely great. The different types of ceramide complexes, हर cream में आजकल ceramides डलते हैं. Just hydration के लिए बहुत अच्छा rejuvenation मिलता है इस face को. You know, it just is the best thing for your skin. So when it comes to moisturization, if your product can have ceramides, nothing like it. What about glutathione and creams? Ajkal there are lots of body lotions and all that apparently have glutathione. Yes. Does it work topically as well? I don't think so. Topically इतना है, more of a placebo effect. I don't think topically it will have that kind of effect. Okay. Yeah. Next. Okay, so talking more about these machines, so these electric blackhead removers that No, pick I and- hate it. No. So this is again very viral. All these jade roller and the stone. Gua sha. Yeah, gua sha stone.
I think there was definitely a phase in everybody's life where they actually felt कि gua shas, they definitely work. There are a lot of people still who will swear by that it works. So I'm going to tread very carefully here and say, when used correctly, depending upon your face type and आप कैसे use करते हो, gua shas can definitely help, right? But अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल gua sha से ही बिल्कुल tight cheekbones वगैरह and you'll get a very sharp jawline, that's not going to happen. Okay, but do you need them? I mean, I've seen videos where they're like No, fingers there is still, no so- need, absolute no need. So जब face yoga करते with your fingers, that's completely doable. I want to ask, what do you think is the biggest scam in the beauty industry? Because come on, there are so many products, so many procedures, so many things. All of them don't really work, right? What is the biggest scam? The biggest scam I feel would be collagen and glutathione creams. Okay. They don't work. Collagen creams specifically more so because collagen is a bigger molecule. And if somebody is telling you कि इसमें collagen है आप लगाइए and you know आपको fillers की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी life में and आपको wrinkles नहीं आएंगे. So I feel collagen creams, they definitely don't work because they're not penetrating your skin to give you any effect. We have all used घरेलू नुस्खे. We have all used home remedies for our skin. So how helpful are these home remedies, and what should you be conscious? What should you be cautious about while using home remedies on your skin? Yeah. So we always tell our patients to be very cautious, because home remedies can backfire very easily, right? So there are obviously some very good nuskhas which are coming down, you know, from families, from your nannies and grandmothers and things like that. For example, I'll tell you something as simple as using a honey and yogurt mixture, very safe, right? It's doable, आप करिए. But जैसे आपने बताया संतरा, नींबू, टमाटर, all of Acidic these things. acidic fruits, they're very bad for your skin. They're corrosive. They're downright corrosive for your skin. Speaking of natural oil, okay, hair oils. Do hair oils really work? Do they solve any problem? When you're trying to use a hair oil just for that relaxation purpose, आपका scalp dry है, आप उसको rejuvenate करने के लिए, for example, coconut oil लगाते हो, and like you use it once or twice in a month, is absolutely fine. Right? Absolutely fine. आपको उससे conditioning होगा, आपके बालों को अच्छा feel होगा, you know, you'll feel relaxed, rejuvenated and all of that. Please go ahead and do that. But if you feel कि मैं daily चंपी करूँ, overnight तेल लगा के रखूँ, उससे मेरा dandruff चला जाएगा, उससे मेरा hair fall रुक जाएगा, then that is wrong. Hair oils will not help you control dandruff. They are not going to directly in any way help you control your hair fall or hair thinning or hair breakage, nothing like that. So basically, you're saying hair oil isn't solving any problems. It's not really solving any problem. Why so? Because only solving कि अगर आपका dry scalp है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी scalp है, dry scalp है, आपने oil लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है, 1-1.5 घंटे आप उसको रखो and then you wash it off, then yes, it's helping you, but not for the other things that I've just told you. And not in the long run. Not in the long run. Even the viral rosemary oil. Oh, rosemary yeah, hair oil. That's a good question. Rosemary hair oil has, there have been studies which has proved, and it is, you know, talked about dermatologists all over the world. It's a good home remedy. So, you know, they've paired it right next to minoxidil, which is like this great concoction that doctors provide you with. Rosemary hair oil works, but again, hair oil ka na, uska consistency is not oily. Yeah, rosemary hair Rosemary oil. hair oil is more watery. It's more fluid in nature. So, yes, I would say rosemary hair oil. अगेन थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे जाऊंगी कि डिपेंड करेगा आपका कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग है, पैचेस ऑफ बॉल्डनेस है और आप उस पर रोजमेरी से सोचो कि ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा. बट इफ़ आप प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर रहे हो कि बाल बहुत अच्छे हैं, बट ठीक है मैं प्रिवेंशन के यूज़ कर रही हूँ, या थोड़ा थोड़ा हेयर थिनिंग हो रहा है, आप उसके लिए उसको यूज़ कर रहे हो वंस इन अ वीक द राइट वे, देन येस इट विल वर्क फॉर यू. Can a hair shampoo actually help with hair loss or hair problems with your hair? येस, शैम्पूज जो बहुत अच्छे से फॉर्मुलेटेड हैं, फोर्टिफाइंग उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं आपके बालों के लिए, क्लीन हैं. अगर मुझे पता है कि यू नो अब जैसे लोग कहते हैं कि यूज़ एब्सोल्युटली नो पैराबेन्स इन द शैम्पू, राइट, एंड दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. पैराबेन्स आर सो गुड. इफ़ यू हैव एन ऑयली स्कैल्प, आपको इतना एक्ने होता है स्कैल्प पे और आपका क्लीन ही नहीं हो पाता स्कैल्प, तो आपको सल्फेट्स की ज़रूरत है टू प्रॉपरली क्लीन ऑफ योर सीबम एंड यू नो ऑल द डर्ट ऑन योर स्कैल्प. लेकिन आपको पता है कि आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो उससे आपको इरिटेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक्जिमा हो जाता है, तो हम आपको देंगे सल्फेट फ्री, आपको जेंटल फॉर्मुलेशंस देंगे. आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है फॉर XYZ रीज़न, तो हम आपको जेंटल फॉर्मुलेशंस देंगे. But can shampoo actually help with hair fall? Not directly, and not single-handedly, no.
ओके सो हेयर फॉल की बात कर लिया तो हेयर रिमूवल की बात कर लेते हैं. Yes. तो हाउ सेफ इज लेजर हेयर रिमूवल, हाउ इफेक्टिव इज इट, एंड क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है कि इसके बाद बाल नहीं आएंगे? It is safe when again done hygienically, good machinery, good trusted doctor, and or your therapist. It is safe. But अगर आप सोचो कि ये permanent solution है, it is not permanent hair removal. It is hair reduction. यानी कि अगर आपका बाल थिक है तो वो विद ग्रेजुअल सिटिंग्स पतला हो जाएगा. इट विल बिकम मोर विस्कस, इट विल बिकम लेस विजिबल. Yes, there will be patches where you'll experience hair loss also, but it is not permanent hair removal. That's the biggest myth. आपको सिटिंग्स के साथ आपको धीरे धीरे you'll see the improvement. Density कम हो जाएगी, बालों की thickness कम हो जाएगी. You will feel much better, confident, but you'll have to sit through it. कितने सिटिंग्स कराने पड़ते हैं? Again, person to person depend करेगा. Minimum से minimum हम देखें तो 6 sittings तो is when you need for to get a very satisfactory result. And then people go on taking it, after every 3 months, 4 months, depending कब उनका growth आता है. Because with each consecutive sitting, आपका जो hair growth cycle है, आपका hair growth बहुत कम होता जाता है, right? So you will not have as much as hair growth as you would have. So again, how effective are these methods, and what is the best way for it? I don't find them to be very effective, honestly. If you want to spend, I would not ask you to go and purchase it when you can easily walk into a clinic and get it done, and get it done effectively. You can get it done in a hygienic environment from somebody who knows exactly what they're doing. Okay. And you need to understand, with so many lasers in the market, lasers also have a tendency of giving you pigmentation. Let's not forget that. Okay. Yeah, because ultimately आपको PIH भी हो सकता है इन lasers से. They can always backfire. And specifically जब आप ऐसे घर पे बुला के लोगों से करवा रहे हैं, there are a lot of things that going on. I am not a big fan of such things, and nor would I advocate such things. Okay. Okay. So no DIY for laser. No DIY for Yeah, laser. I definitely think we not. should just stop DIYing things with skincare and hair care. I think, because if they're good things, why not try them? Why not go and try Okay. them? I have been waiting to ask this. Have you seen Rajkumar Rao's chin, which was trending for a while? So the shape of his chin has changed Yeah. over the years, and people were pointing that out and saying that ये तो plastic surgery करवाया है. So later on he commented on that and he said मैंने fillers करवाए हैं on my chin. Yeah. So what we want to understand is, so tell us what the difference is between plastic surgery and fillers. So बहुत difference है. नाम से ही पता चल रहा है plastic surgery is surgery, right? And fillers is, now if I have to just explain it to you, plastic surgery is more of an invasive procedure which has to be done, by specific plastic surgeons. It involves, you have to change your entire, for example, the bone structure, and it involves surgery, it involves anesthetists, it has a downtime, proper आपका surgery हुआ है. Fillers on the other hand are minimally invasive to non-invasive procedures. You just need a needle. We inject fillers and कोई downtime नहीं है आपका. You can just walk out of, it's an in-clinic procedure, in-office procedure. So plastic surgery, और इसमें ये difference है, plastic surgery is done by plastic surgeons. Period. Nobody else can do that. And fillers is something which is an in-clinic procedure, office procedure. आप आइए, we inject it, and if it's done subtly, nobody can even make out. So fillers are Botox or? No, absolutely not. Fillers and Botox are two very different things again, right? So Botox is basically a neuromodulator. It's a toxin. बोटॉक्स को एक टॉक्सिन होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, हम आपके मसल्स जो ओवर यूज हो रहे हैं उनको पैरालाइज करते हैं, राइट? बट इट इज़ नॉट, डोंट गेट स्केयर्ड बाय द वर्ड पैरालिसिस. इट्स जस्ट यू डूइंग इट टू control the wrinkle formation in your skin. Fillers on the other hand is where you use them, is where you have to restore lost volume. You understand? अच्छा, जहाँ okay. पर आपको फिलिंग इफेक्ट चाहिए, फिलर्स क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं. कुशनिंग इफेक्ट चाहिए आपको, अंडर आई से आपका जो है थोड़ा सा एज के साथ आपका सैग कर रहा है. अंडर आइज के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉमनली फिलर्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज यू लूज विद एज, यू टेंड टू लूज गुड फैट पैड अराउंड योर आइज. अगेन सिंपली कही जाए, फिलर्स से हम फिल करते हैं, बोटॉक्स से हम लाइंस गायब करते हैं. There is that, have you seen that really scary looking chemical peel? I think Yeah, it's Oh, called the phenol that like peel. just comes Yeah. out. Yeah, your face comes off like a Yeah. mask and you look like a whole new New person. person. Yeah. Is that safe? Yes, I mean a lot of people do it. Safe again जब आप डॉक्टर से करवा रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, you're following
all the post procedure instructions which are given to you by a doctor, because उसके साथ डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है. You'll have to stay indoors, you'll have to follow a particular skincare regime, you'll have to completely avoid sun. So yes, as long as you're ready to do that and you're okay with going through so much of changes over several days, Yeah, it takes several days. then yes, you can go ahead with it. And that is completely, again, a talk to happen between you and your personal dermatologist, whether the dermatologist feels, because usme bhi they'll have to see a few things, you know, whether you're even a good candidate for it, right? So how much is the sun damage, how much is this, and specifically we don't try to experiment with brown skin, at least in my experience. I would rather give you results more strategically, more systematically over a couple of weeks rather than, you know, putting you through it. You never know how a person could react to it. So we're gonna do a fun thing where we are basically going to do a recommendation segment. Yeah. Product or procedure, anything is okay. So yeah, Sonali, why don't you start? Best moisturizer for day, for night. What should I use? Oh my God, why will I will sound biased, but I love CeraVe, the brand. Okay. I absolutely love that brand. Okay. And if you're going to go for an Indian brand, I would say a brand like, say, Dr. Sheth's. Oh, yeah. So best sunscreen. So difficult to answer. I don't know. I can't give you one brand. Give us with two. this. Give us three. That's fine. All right, so sunscreen, La Shield is a great brand. Yeah, Eclairis Photon is my favorite actually, and Cetaphil has good sunscreens, easily available. Best hair fall or hair thinning solution. If the hair fall is severe, I would say minoxidil. Hair thinning ke liye, I would say please get PRP done. PRP is amazing. It's a procedure where we again inject the same PRP into the scalp. Really works. Best anti-aging solution. Retinol at home. Yes, definitely. Okay. Hands down. Best solution for dark spots and pigmentation. Sunscreen. Might sound controversial, but आप कुछ भी लगाओ, and if you're not using sunscreen on top, then you're practically not doing anything. So I would say even if you have the worst skin and you're using sunscreen regularly, you're keeping it protected, your body also has its own mechanism in play. आपका body अपने आप भी exfoliate कर रहा है, right? आप सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करिए. आप मत खरीदिए serums, आप मत खरीदो विटामिन सी, मत खरीदो lactic acid. Apply a good sunscreen, your body will do the rest of the work. Best solution for dandruff. Oh, best solution for dandruff is simple. You use an anti-dandruff shampoo, period. Okay. Suggestion? Any names? Yeah, so you have Selsun, you have, Nizoral. One good Indian brand which has good formulations. I wouldn't say 100% good, formulations. There's definitely Some products. some are, of products course, yeah. which have missed the mark. Yeah. I feel we'll all agree here that Minimalist has done a good Right. job with Indian market. Yeah. And another brand that I like to work with and I've generally, appreciated throughout is Dr. Sheth's. Okay. We were discussing like why do men have such Better better skin skin. than women? As a profession, as a doctor, I see equal amounts of issues with males as well. Pigmentation is an issue. Acne specifically, ladies में ज़्यादा है. Reason being that we are more prone to hormonal changes more hormonal changes compared to men. So I think by the end of the day, we should all blame it on the hormones. Also, does makeup play a part in it? Because बचपन से हम सुनते आ रहे हैं that makeup that is bad for you. for your skin. Is it really bad for your skin? No, I don't is think so. that Makeup also? is bad for your skin. As long as you're using good quality makeup, you know what you need and you're using the right thing. Now, the basic issue with makeup is how you're applying it, right? So your tools have to be very clean. अगर आप tools नहीं भी use कर रहे, हाथ पे use कर रहे हो, make sure you're washing your hands before you're applying anything to your face. I've seen people who don't even wash their hands before applying their serums and their creams. So basic things are important, and then again, yes, you need to also look at the INCI list and ingredient list of your makeup also. That's also very important, right? Now, if I have a normal to combination skin and I'm using a completely mattifying product, right, it might not work out for me. And if you have an oily skin and you're using more moisturization, you're using products based with talc and things like that, then again, you will have the tendency of clogging your pores and then eventually developing acne. So makeup directly will not cause you acne unless until you're severely allergic to something in the product. Makeup application is very important. So wash your brushes, wash your tools, change your beauty blenders. I've seen girls using the same beauty blender for like 1 year, 2 year,
not washing it properly, usko गीला कर लिया, and then you're just layering it on. So that is a very good breeding ground for bacteria. And then you're transferring that bacteria each time you're applying makeup. So just take these precautions, and I think, I love makeup. Formulations की बात करें तो how do you separate a good formulation from a bad formulation? See, Because now we are all looking at the inky list at the back of our products. See, bad formulations, Sonali, are actually a thing of the past. Nowadays, brands, they actually try to make very good quality products. So see, for example, you see a company like Too Faced, you see a company like Bobbi Brown, or say Fenty, these big artists also coming out. So they are definitely making very good quality products. NARS is a great brand. So we always tell the patients to use quality products from quality brands. Now, I don't want to name other brands that don't make quality products, but yes, you need to see that there should not be a lot of fragrance in the product. I feel fragrances is something that is triggering for brown skin. Yeah, like I think beauty is one of our favorite things, Yeah. like to do, to learn about and everything. Definitely, And I think it's something women these days are just... men as well now. Men like as well, beauty is actually. for That's everyone true. now. Yeah. So thank you so much, Dr. Saru, for being Thank with us you so today much. and for answering all our questions patiently. I hope you had a lovely time. Oh, I had a as lovely did we. time. And I really hope the people watching this actually realize the importance of skincare. Absolutely. Importance of skincare and the right guidance. Right guidance, yeah. Thank you so much for joining us. Thank you, Nishtha. Thank you, Sonali. If you like this video, subscribe to Gist for more such content in the future. And do follow us on our Instagram, Facebook and other social media handles.